all, my class 12 student, welcome you in Balush Educare. This video is about HSC board question bank with solution section 1 prose section. Yes, you will get the link in description box and look at the I button about section 2 grammar section, section 3 mind mapping, section 4 summary writing and so on. In this video series, we will solve the question bank of HSC board examination with smart tricks and tips for better score in board examination. So let's start. दोस्तों चलिए शुरू करते हैं HSC बोर्ड क्वेश्चन बैंक विद सॉल्यूशन सेट 1 प्रोज सेक्शन. Dear friend, this question bank is for practice. No matter all question as it is will become from this in the examination. This question bank is for the practice, but I need to say if we are doing practice, we need to do very well, because from the question bank itself total 85% question will come. So why should we not practice with this only? Because practice makes man perfect to achieve the goal. And let's start with exercise on extract. Here exercise is provided 6 exercise provided. दोस्तों, first of all we will see 6 exercise on extract prose section. As we know, for the examination we have 6 prose for this academic year. So let's begin one by one. HSC board question bank for 2020-2021. And yes, for more educational videos, stay tuned with Balush Educare. Like, comment, share, subscribe our educational channel. Let's begin with extract 1. See दोस्तों, this extract is from आगे आए सब्सक्राइब करें Astrologers Day 1.1 by R.K. Narayan. This story is about one particular day in the life of astrologers, how he is running his business of telling people the palm histories and so on. So this is all about this extract. You can take this quick screenshot. If you want the question bank, the link is given in description box, so you can download it from there also. So just have a quick look on the extract and we will go ahead. Dear friend, read the extract carefully twice. आपको इस extract को 2 बार पढ़ना है. The second important tips for you is this: before reading the exercise, दोस्तों, let's start with extract 1 on prose section. This extract is from 1.1 Astrologers Day by R.K. Narayan. दोस्तों, ये extract समझने से पहले आपको this is from seen passages, so definitely आपका टेक्स्ट बुक में से ही पैसेज रहेगा, तो आपको इसको अच्छी तरह से पढ़ना है. यहाँ पे एक आपके लिए ट्रिक्स है. एक्सट्रैक्ट पढ़ने से पहले एग्जाम में आपको क्वेश्चंस पढ़ना है, देन गो कम टू द एक्सट्रैक्ट एंड देन रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली twice and then start solving the activity. This extract is about one particular day in the life of astrologers who become by chance astrologers. As you may know about the story, and he is sitting at the place of marketplace and telling people palm history. This is how he started running his business. And what happened in there? This is all about the story about Astrologers Day by well-known famous writer R.K. Narayan. Just you can take the screenshot. Otherwise, if you need the question bank, the link is given in the description box, so you can download it from there. So let's see the question with solutions. First one, A1, state each the given statements or true or false. Read the question carefully. यहाँ पे आपको एक ध्यान रखना है कि क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ना है.
And the second one important tip है, don't write question, only mention answer. Okay, आपको A1 state if the given statement or add true or false ये questions नहीं लिखना है. Directly you can write the statement A1, write whether it is true, false, and don't write TF. Write full true, whether it is false, whether it is true, whether it is false. And now see the first one, state if the given statements or true or false. खाली पूछा है कि आपको true है या false है. It can be a question like this. Find out the following statement, only true statements and rewrite it. So उसी टाइम आपको खाली true statement find out करना है. ठीक है? दोस्तों, let's begin solving the question bank. A1, state if the given statement are true or false. So यहाँ पे आपके लिए टिप्स है, डोंट राइट क्वेश्चन ओवर हियर, क्वेश्चन को रिपीट नहीं करना है, ओनली मेंशन आंसर. खाली आपको आंसर मेंशन करना है. रीड क्वेश्चन केयरफुली. दिस इज द बेसिक इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर यू. स्टेट इफ द गिवन स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स. ओके, नीचे जो स्टेटमेंट दिए फोर, वो ट्रू है या फॉल्स है, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है. देन 1, 2, 3, 4. तो फर्स्ट वन है, just goes on reading. First one true, second one false, third one true, and fourth one true. So in this way you can write. Look at the activity A2. Complete the given wave. The wave is given in the question bank. Activities of astrologer. Activity astrologer क्या क्या करता था, इसके लिए suppose so I am telling you. So read the question first and then go to the reading the extract. So आपको जब भी आप एक्सट्रैक्ट पढ़ रहे हो तभी आपको समझ में आएगा कि ये हम इस टाइप का क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा गया है. तो व्हाट एस्ट्रोलॉजर्स डूइंग, सेटिंग प्रोफेशनल इक्विपमेंट, मेकिंग सेल्फ अपीयरेंस लाइक एस्ट्रोलॉजर, carrying the wages home at end of the day and searching the customer for professing. This is what he is doing full of his days. एंड यहाँ पे क्या करना है, जो भी डायग्राम दिया है वो एज इट इज आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो. अदरवाइज 1, 2, 3, 4 नंबर लिख के भी इसका आंसर आप लिख सकते हो. सो ड्रॉ द डायग्राम वेरेवर नेसेसरी इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो. नाउ सी A3, all A1 to A6 for 2 marks. A3, the astrologer was shrewd judge of character. Explain with some details from the extract. Astrologer is shrewd judge of character. For this kind of question, we should know the extract very well. We should know the prose very well. वो आपको पता है तो not necessarily you should copy it from the passage as it is. तो इसके क्वेश्चंस का आंसर मैक्सिमम 5 to 6 लाइंस में होना चाहिए. And now see, ये shrewd judge है, explain with some details from the extract. उसके जो डिटेल्स आपको extract में से ही देने हैं. You can take a screenshot of this answer also. Now see A4, which is known as a personal response to question. We need to understand even the smallest detail of business in order to proceed. Write your views. यहाँ पे personal response type question है, इसको आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है. और while writing personal response type question, positive approach towards writing personal response. आपका एकदम positive approach इसके ऊपर होना चाहिए. So you should first of all begin with like this. I agree that we need to understand even the smaller details of business in order to succeed. Because a small hole can sink the ship and small jack can lift a big truck. If you understand the smaller detail of business, we can. And then here यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, टिप्स दे रहे हो for the business success के लिए. Impress the customer, get a lot of money, sell all the products in large number, grow our business, advertise the product effectivity, become a successful businessman. यहाँ पे आप खुद का भी आंसर लिख सकते हो. एक स्मॉलर बिजनेस हो, आपने शुरू किया है, उसको सक्सेस करने के लिए क्या क्या करना जरूरी है, ये आपका व्यूज आपको यहाँ पे लिखना है. और इस क्वेश्चन को बिल्कुल मिस नहीं करना है, as it is very important and definitely you will get marks as it is your view. Now see A5, do as directed. It was a remarkable place in many ways. Choose the correct alternatives to write the given sentence in exclamatory as an exclamatory sentence. Choose and write the correct sentence only. यहाँ पे जो 4 statement दिए उसमें से आपको find out करना है कौन सा correct है. And the correct one is third one. What a remarkable place in many ways it was. Now look at the second one. He spread out his professional equipment which consisted of a dozen cowrie shell.
Again, choose the correct alternative to rewrite the given sentence as a compound sentence. We know there are three types of sentence: simple, compound, and complex. Given statement is about complex sentence, or we need to find out the compound sentence. Compound sentence means which is joined with like and, or with the conjunction, or with the linkers. And the correct answer is the second one. He spread out his professional equipment and it consisted of a dozen cowrie shells. Now look at the next A6. Find the synonyms for the following words from the passage. यहाँ पे आपको synonyms similar meaning word passage से फाउंड आउट करना है. इसके लिए आप पहले क्वेश्चन रीड करोगे, तभी आप जब भी पैसेज पढ़ रहे हो तभी आपको सिनोनिम्स वर्ड वहीं पे ही आप मार्क कर सकते हो. एंड इट्स इजी वन टू फाइंड आउट. Now confusing, bewildering, difficult to understand, obscure, hanging around, delight, magical effect, enchantment, and this is how you can just find out. But यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आपको ये do as directed A5 लिखो, फिर बाद में write A1, then बाद में directly write the third one. Don't write the options over here. The same about the second one. उसके लिए भी आपको directly उसका आंसर second one ऐसा लिखना है. पूरे क्वेश्चन लिख के इसको ऐसे मार्क मत करो, खाली आपको इस टाइप का आंसर इसमें लिखना है. सो डोंट फॉरगेट व्हाइल राइटिंग सच अ काइंड्स ऑफ आंसर्स. ओके, देन सी वी विल सी द नेक्स्ट वन नाउ. Now see extract second. As I told you, we got 6 extract for practice for the board examination, और उसमें से ही एक आने वाला है. तो एक बार खाली आप इसको अच्छी तरह से ध्यान देके पढ़ो और क्वेश्चन आंसर को अच्छी तरह से देखो. Read the extract and complete the activities given below. This extract is for 12 marks, like 6 activity, A1 to A6. Each activity for 2 marks, and this extract from 1.2 on saying please by A.G. Gardiner. And this is all about about importance of words like thank you, please, excuse me, please, all this. And Gardiner is given example of one liftman and one bus conductor, and how the good behavior sweeten the atmosphere and how the bad behavior spoil the atmosphere. It is shown by the narrator, the example of liftman and the bus conductor. So dear friend, आपको हमको एक्सट्रैक्ट के बारे में थोड़ा बहुत पता है तो बहुत इजी हो जाता है एक्सट्रैक्ट सॉल्व करने के लिए. नाउ read the extract carefully, the choice. Before that, read the questions and then read the exercise. Don't forget this tips forever while solving the examples. Now see, look at this. A1, read the following statements and pick out the statement which explain the intention of the writer. Writer का intention क्या है इस extract के पीछे, वही आपको लिखना है. Then write A1 in answer sheet and write directly this one option. Right, there is an importance of good manners and civility. This is correct answer. A2, pick out the some examples of behavior from the extract are not punishable under law. ओके, यहाँ पे क्या है कि ऐसे कौन कौन से बिहेवियर है उससे आप बिहेव करोगे, मिसबिहेव करोगे, फिर भी लॉ से पनिशमेंट नहीं मिलती, और वो भी आपको एक्सट्रैक्ट में इसे ही लिखना है. नाउ सी, लुक एट हियर. यहाँ पे गिवन लाइक सम एग्जांपल्स ऑफ बिहेवियर फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट आर नॉट पनिशेबल अंडर लॉ एज फॉलो: अनयूजुअल बिहेवियर, टोन ऑफ वॉइस, call of on face, discourtesy, bad manners, not waxing mustache, no dyeing hair. These are the behavior we can need to find out. But यहाँ पे आपको passage का ही आंसर लिखना है, अपने मन का नहीं लिखना है. So यहाँ पे आपके लिए टिप्स है. mention only correct answer like that आपको आता है, नीचे में से करेक्ट करना है. दो लिखो, दो मत लिखो, खाली करेक्ट एक ही आपको ऑप्शन में लिखना है. ड्यू 6 to 7 examples in this matter. Now see A3, the passenger damaged the like liftman's self-respect. Support your answer with some facts from the extract. Okay, passenger, this is a statement from the extract itself, और यहाँ पे आपको supportive answer देना है, वो भी extract में से ही देना है. So you can just read out this answer, so it will be very useful for you. A4, and definitely it's a personally sponsored question, बिल्कुल नहीं मिस करना है. What if discourtesy is a legal offense? Write your response in about 30 words. Okay, discourtesy जब भी legal offense होता है, discourtesy means
और ऑनेस्ट बिहेवियर, बैड बिहेवियर, और उसको ऐसे बैड बिहेवियर से भी आपको पनिशमेंट मिलती है, एक ऑफेंडर कंसिडर किया जाता है। तो आपको इस रिलेवेंट टू इसके आपको सपोर्टिव आंसर लिखना है, राइट इन अबाउट 30 वर्ड्स। सो यू कैन जस्ट कॉपी राइट फ्रॉम here, you can take the screenshot for this answer, and this इस is वीडियो answer को you can write by व्हाट्सएप और your फेसबुक own पर view. शेयर Okay, करें। now the next one, A5 who was directed, scene grammar from extract. If physically assaulted, it will be permit me to detail it. Choose the correct alternatives to use. Okay, यहाँ पे क्या है, आपको ऑल्टरनेटिव दिए हैं, स्टेटमेंट दिए 4, और उसमें से आपको करेक्ट लिखना है। और रिगार्डिंग क्या है, करेक्ट के लिखने के लिए कौन सा लिखना है, अनलेस, अनलेस का सेंटेंस फाइंड आउट करके लिखना है। सो थर्ड वन इज द करेक्ट वन। यहाँ पे जो 3 दिया है ये उसमें से करेक्ट है। Next one, the law will protect me against violent retaliation. Choose the correct alternative. Use the model auxiliary showing obligation, can, could, may, might, all are the model auxiliary. और यहाँ पे obligation, compulsion find out करना है. So definitely it's a very simple. जो fourth one है, the word this one must is shows the obligation. So fourth one is the correct answer. Now see A6, find out the words from the passage which mean the following. शैक्षणिक संवाद के पैसेज लिए में से आगे फाइंड आएं, आउट करना है, फॉलोइंग है, सब्सक्राइब करें, सिमिलर मीनिंग वर्ड, जिस तरह से लास्ट के पैसेज में था। इसके लिए पैसेज क्वेश्चन पहले रीड करो, फिर पैसेज रीड करो, ताकि आपको समझ में आएगा। दीज आर द आंसर्स फॉर द राइटिंग योर दिस वन। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द एक्सट्रैक्ट नंबर 3. दोस्तों लेट्स स्टार्ट विद एक्सट्रैक्ट नंबर 3. एक्सट्रैक्ट 1.3, The Cope and the Anthem by O. Henry. The main character Sophie, he is from criminal background, who trying to re-enter the prison as he is not having shelter to protect from severe cold, and he did 5 attempts to re-enter the prison but unable to re-enter, and at the last what happened, so in when he finally went to the prison, and this is what the story, very interesting how he is trying to get inside the prison. Just go through the extract, look at the I button here, link is given about this extract which I explained in detail. We should know the extract first, so it is very useful for you to solve the activities. Now let's start now with the question answer. Now the first one, A1, Sophie's attempt to get into Winter Island. Attempt 1, attempt 2. तो यहाँ पे कौन कौन से उसने attempt किए? As we know, he attempt 5 times to enter the prison, लेकिन extract में 2 ही दिए हैं, तो according to extract आपको इसका आंसर लिखना है attempt 1 and attempt 2. So find out this one. See the next, A2, complete the given statements in 30 words. Sophie couldn't enter the restaurant because Sophie couldn't enter the restaurant because why he unable to enter the restaurant, as it was his first attempt. So you need to answer in this way. You can take the screenshot for your more detail. Okay. और जो आंसर्स है वो एज इट इज नहीं लिखना एक्सट्रैक्ट में से, खुद के वर्ड्स में उसे एक्सट्रैक्ट को सिंपल वर्ड्स में लिखना जरूरी है. A3, Sophie had confidence in himself from the lowest button of his vest upward. Here the lowest button of his vest upward means, okay, तो इसका आपको मीनिंग लिखना है which is already given, just go through. A4, if a person tries to damage the public property, how he will react in such a situation? This is also a response type question. Write your answer in 3-4 lines, and this is for the 2 marks. तो यहाँ पे कोई public property damage करता है, तो आप वहाँ पे देख रहे हो, तो what is your reaction? So यहाँ पे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं. If a person tries to damage a public property, I will react in such a situation as follows. Then write the number, otherwise write in this way. I will try to understand the reason reacting like this. I will convince him not to do like this. I will try to persuade him, giving some suggestions. I will tell him the importance of public property, and I will inform the nearest police.
station. So this is what the answer. The other answer is expectable as it's a kind of person response type का question है. Now see A for you. Do as directed. Grammar शैक्षणिक संवाद from के लिए extract. आगे आए. The policeman Subscribe करें refused to accept विद्या Sophie वार्ता. even as a clue. तो यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है. चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स टू ट्रांसफॉर्म एज ए नेगेटिव स्टेटमेंट. तो दिया हुआ क्या है? ओके, रिफ्यूज, तो आपको नेगेटिव स्टेटमेंट बनाना है. सो इवन द पुलिसमैन डिडंट एक्सेप्ट सोफी इवन एज अ क्लू. ओके, so this is the correct. The second one, don't you think that I might have something to do with it, said Sophie. Choose the correct alternative to change the sentence into indirect speech. Direct indirect speech का ये statement है और आपको find out करना है कौन सा सही है. The second one, Sophie asked if he didn't think that he might have had something to do with this, and the second one is the right statement. And while writing examination, write the right statement only. Don't write many options over here in the answer. Now look at the next one. A6, match the words in column A with B for the 2 marks. यहाँ पे column A है, B है, O दिया है. आपको इस तरह से जो नीचे दिया है इस टाइप का आप आंसर लिख सकते हो. इस टाइप का आंसर मत लिखो. इसको सपोज A का ये B है, इसको इस तरह से ऐसा मत करो. This is very wrong method. You can write in this way. Okay. Right, column A and B. Now, so dosto, stay tuned with Balush Educare. If you're new here, so like and subscribe our channel. And let's start with extract number 4. Dosto, this extract is from 1.4 Big Data, Big Insight for 12 marks. And this is all about how data is important, how data is advanced also. So this is all about the extract. So you can take screenshot and read the extract twice before read the question and then read the extract. Okay. Now see, A1, arrange the sentence in order to summarize extract according to proper occurrence. यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दिए हैं. फर्स्ट कौन सी इंसिडेंस हुआ, नेक्स्ट कौन सी है, थर्ड कौन सा है, द नेक्स्ट स्टोरी वी राइटिंग इन लाइक सीक्वेंस वाइज. उसी टाइप्स में आपको एक्सट्रैक्ट को प्रॉपर अकरेंस में जो फर्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा है, उसको लिखना है. एंड नाउ दिस इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ दिस वन. बट व्हाइल राइटिंग इन आंसर शीट आपको इसका जो नंबर है, द सेकंड वन इज द फर्स्ट, तो आप इसको फर्स्ट लिख रहे हो, नंबर को मेंशन करना जरूरी है. ये सभी नंबर को भी आप मेंशन करो, फिर बाद में राइट द full statement also. So this is the correct occurrence of the statement. Now see A2, big data analytics play a vital role in justify. and data analytics है वो main important role play करते हैं, उसके justify आपको answer देना है as very important in industries and companies nowadays, in advertising and all. So this is how you can give the analytics about this. Now don't change the sequence of sentences. ये जो sequence है वो बिल्कुल नहीं change करना है, as I already told. A3, big data is great challenge to the present computing technologies explained. जो present computing technology है उसके लिए अभी big challenge है. This is kind of again analytical based question. ये आपको थोड़ा समझ के लिखना है, और you can say this is, you need to write your own view about this. And this is where you can write. A4, we tend to refer the certain features of the product or service before order. Give the reason of such conduct. हम क्या करते हैं? We tend to refer certain features of the product service before order. Give reason for such conduct. क्वेश्चन को और एक बार पढ़ो. बिकॉज जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट ऑनलाइन बाय करते हैं या शॉप में जाके बाय करते हैं तो हम उसके फीचर्स देखते हैं कि कहाँ पे, सपोज हम मोबाइल फोन ले रहे हैं तो व्हाई वी आर डूइंग दिस, क्यों हम ये देखते हैं. सो दिस इज द रीजन. वी टेंड टू रेफर द सर्टेन फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस बिफोर ऑर्डर बिकॉज वी विश टू गेट द बेस्ट प्रोडक्ट. वी विश टू गेट ऑल क्वालिटीज फीचर दैट वी रिक्वायर. वी थिंक अबाउट इट्स ड्यूरेबिलिटी टू मेक श्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेयर पार्ट्स एंड सर्विस सेंटर टू कंपेयर विथ other products, to inquire about this advanced feature
not to repaint in फ्यूचर. सो एक्सप्लेन आप इसको न्यू वर्ड्स में भी कर सकते हैं, लेकिन गिव रीजन इस टाइप का, जस्टिफाई योर आंसर और इस टाइप का, तो आप इस तरह से नंबरिंग देके भी क्वेश्चन के आंसर्स लिख सकते हो. नाउ सी A5 dual directed. If you have ordered something online, you can track the location of your goods in transit. Choose the correct alternative to use of affirmative आफ्टर प्लस ing जो यूज किया है उसका आपको करेक्ट अल्टरनेटिव यूज करना है. सो नाउ सी जस्ट लुक एट योर द सेकंड वन एंड फोर्थ वन. एलिमिनेट दिस. एलिमिनेशन यू कैन डू. ये तो हो नहीं सकता, द फर्स्ट वन सेकंड वन नहीं हो सकता, सेकंड वन एंड लास्ट वन है, but the correct one is the second one, and this is your correct answer. Next one, big data analytics. The complex process. Choose the correct alternative to choose this sentence as a negative statement. Okay, ये positive दिया है तो आपको negative find out करना है. So fourth one is the correct. Big data analytics is not a simple process. Next one, A6, pick out the antonyms of the following words from the passage. Antonyms opposite meaning words find out करने हैं, passage में से ही वो करने हैं. आप फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अंडरस्टैंडेबल, मिसअंडरस्टैंडेबल इस तरह से आप नहीं लिख सकते हो, पैसेज में से ही होना चाहिए. एंड दिस इज हाउ वी डिड विद एक्सट्रैक्ट नंबर. नेक्स्ट, extract number 5, and this extract is from Into the Will by Kiran Purandare, and this extract from the second part, and just go through this. We will see the activities in detail. A1 to A6. Now first one, A1, complete the given flowchart about the writer's activities. For 2 marks जो फ्लो चार्ट दिया है वो आपको कंप्लीट करना है. राइटर्स की एक्टिविटीज के बारे में है, जिस वे से चार्ट दिया है उसी वे से आपको ड्रॉ करके करना है, नहीं तो आप नंबरिंग देके भी उसको कंप्लीट कर सकते हो. सो दिस इज अप टू यू. नाउ फाइंड आउट द राइटर कंप्लीटेड हिज टास्क सैटिस्फैक्टरीली. ही रश्ड टू Pizzeri village where he was stationed. He was alarmed of a predator in vicinity, and he came to know about the existence of leopard nearby. Now see next one, A2, enlist the clues which confirm the presence of a leopard. यहाँ पे जो present leopard राइटर बीच में स्टक हुआ था, he unable to find out the way to go to the Pizzeri village, तो वहाँ पे उसको सडनली लेपर्ड का प्रेजेंस हो जा, कैसे पता चला, तो दिस इज द रीजन. So you can take the screenshot for this one. Now see A3 completes. I was alone like a fox. The writer compares himself to the fox because, okay, writer's narrator stuck in between that forest, so he unable to find out the way, and he is comparing himself with the fox. Why? What was the reason? Because the foxes prefer to live alone and they hunt alone. In the same way, the narrator also was doing in research alone in a jungle, and he was returning to the village Pizzeri alone. Hence, he compared himself to the fox. Very simple है, और आप इस तरह से उसको लिख सकते हो. Because fox likes to live alone, like writer is also doing his research and everything alone. That's it. A4, state what precautions you would like to take after finding yourself lost in jungle. आप जंगल में lost हो जाते हो, in case what precaution we should take. So I will try to call phone. Sometimes call may be unable to reach. You can write in your own way. Climb the some higher place to see nearby signs of human existence. Be alert of the wild animals. Hide myself to some safe place if it is dark. Try to go alone to flow of the river. Not lose the courage. In this way, or you can write your own questions what you remember. Now A5, dual directed scene grammar from extract. 1. The langur is the most reliable in finding clues in jungle about predators. Then choose the correct alternatives, and that gives the transformation of the given sentence in positive degree. Okay, आपको correct alternatives find करना है which shows the positive degree over here, and the correct alternative is the first one, and that is no other animal in a jungle is as reliable as langur in finding clues about predator in jungle. We know there are 3 types of degree: positive, superlative and comparative. Here as in the positive degree, very easy to find out, like as is used and all. Now look at the next one. Second one, I conflicts the height. Choose the correct alternative.
that has simple present tense form. जो फाइंड नीचे में से जो सेंटेंस दिए उसमें से सिंपल प्रेजेंट टेंस द फर्स्ट टाइप्स ऑफ द प्रेजेंट टेंस है वो फाइंड आउट करना है. सो I conflict the I. So what do you find out the difference between here? यहाँ पे क्या था, ये सिंपल पास्ट टेंस था तो हमने फाइंड आउट किया सिंपल प्रेजेंट टेंस. दिस इज हाउ यू कैन find out and write only correct alternatives. A6, find word from the extract which mean the following. Again the same one, to hide oneself by conveying of the natural and article artificial material and the misleads the enemy, conflict, finishing the work, wrapping up, to successfully walk over, trade, making oneself safe from danger, secure. And this is how we completed the extract number 5. Now the last extract number 6, and this extract from Achyut Godbole 1.8 Voyaging Towards Excellency, and this extract is about how the journey autobiography of Achyut Godbole. So you can go through in detail. Now see, let's move towards the solving activity. A1, complete the given statements for 2 marks. The writer got admission in IIT as he, okay, उसको एडमिशन मिला तो आप रीजन लिख सकते हो. द सेकंड वन, द पुअर इंग्लिश ऑफ राइटर वाज रिस्पांसिबल फॉर, he was unable to speak fluent English and what he did for all this. So this is the answer you can write over here. A2, describe the state of mind of the writer when he came from Solapur. Okay, state of mind क्या था writer जब भी वो सोलापुर से आए थे. So this is when writer came from Solapur. Initially he was quite happy because of his weak English. His condition was quite pathetic and his pronunciation was terrible. He felt awkward and he felt quite lonely, terrified, developed as an inferiority complex and wanted to run away from IIT Mumbai. Now see A3, the incidents of the insult by a senior was a blessing in disguise for the writer. Explain. And so senior ने उनका इंसिडेंस किया था तो वो जो इंसल्ट किया था वो ही उनके लिए ब्लेसिंग था. तो इसका आंसर इस वे से आपको लिखना है एज इट इज, पैसेज में से नहीं कॉपी करना है. ट्राई टू मेक इट अ स्मॉल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस एंड राइट द होल इंसिडेंस इन योर ओन वर्ड ओवर हियर. नाउ सी A4, take screenshot over here. A4, we need to push ourselves forward. Share your experience. We need to punch to push ourselves forward. हमें खुद को पंच करना जरूरी है. कुछ ना कुछ ऐसा इंसिडेंस होना जरूरी लाइफ में, तब तक हम आगे नहीं जा सकते. मे बी इंसल्ट हो या खुद को कुछ ना कुछ ह्यूमिलिएटिंग फील होना बहुत जरूरी है. आपका ऐसा कुछ एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे शेयर कर सकते हो. यहाँ पे दिया है I am going to write A4 because personal response type का question होता है. आप the way you can write your own way, it's acceptable. Life is not the bed of roses. Okay, we face many difficulties while going ahead in life. Due to some failures, shortcomings, we may get depressed, but we need to punch to push ourselves forward. When I was learning to ride bike, I got my hand broken. I feared a lot, but after some days, I punched the fear and learned to ride the bike. ये सिंपल एग्जांपल दिया है. कुछ ऐसा फेल्योर आ भी जाता है तो भी किस तरह से मैंने खुद को पंच किया और मैं वो स्किल हो या कुछ सीखना हो या गोल हो, मैंने किस तरह से अचीव किया, इसके बारे में आपको खुद का एक्सपीरियंस यहाँ पे मेंशन करना है. A5, do as directed. This statement is about one, not only did I have a very weak vocabulary but my pronunciation also was terrible. And choose alternative to rewrite the sentence as a simple sentence. जो दिया हुआ है वो कंपाउंड सेंटेंस है, आपको सिंपल सेंटेंस फाइंड आउट करना है. देन फर्स्ट वन इज द करेक्ट वन. जो फर्स्ट वन अल्टरनेटिव में आई हैड अ वेरी वीक वोकैबुलरी विद टेरिबल प्रोनाउंसिएशन, खाली जो एग्जैक्ट आंसर आपको लग रहा है या है उसको ही आपको आंसर शीट में मेंशन करना है. सेकंड वन, आई फेल्ट एक्सट्रीमली ह्यूमिलेटेड. चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू रीराइट द सेंटेंस यूजिंग द नाउन फॉर्म द अंडरलाइन वर्ड. ओके, ह्यूमिलिएटेड, इसका आपको क्या है, इस वर्ड का आपको नाउन फॉर्म फाइंड आउट करना है. सो
humiliation, humiliating, humiliation, humiliating. So second one, C1 is the correct one. So humiliated noun form is a humiliation. And the last one, A6, prepare the word register for language. Okay, लैंग्वेज से रिलेटेड वर्ड है, रजिस्टर्ड वर्ड है, तो आपको बनाना है. स्पोकन, ओके, लैंग्वेज. प्रोनाउंसिएशन रिलेटेड टू लैंग्वेज, सेंटेंस, लैंग्वेज कंस्ट्रक्शन, language vocabulary, English, Marathi. In this way, we can write the word register also. And this is how we have did with 6 extracts, which is important for the board examination. I hope you need to take screenshot at many places, so you can take for this also. Very important. I hope you are going through all this in detail. Wherever necessary, you can take screenshots. So thank you so much. Like, share, comment, subscribe. All the best.